नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी मौद्रिक नीति की जो समिति की बैठक है, उसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या नीतिगत दरों पर ब्याज दरें बढ़ेंगी या फिर यथास्थिति रहेगी बरकरार, इस पर रहेगी खास नजर। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा का आज तीसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री चर्चा का देंगे जवाब। कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखी तीखी नोकझोंक। राज्यसभा में भी अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023, निरसन और संशोधन विधेयक 2023 सहित कई अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और आइए आपको सीधे चलते हैं कि एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Global growth. We have also made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust with lower leverage, improving debt servicing capacity and strong profitability. Lower current account deficit and ample capital flows have imparted strength to our external sector. The resultant accretion to foreign exchange reserves has provided a buffer against external shocks. Overall, India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources, and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. In this background, the Monetary Policy Committee met on 8th, 9th and 10th of August. After detailed deliberation on all relevant aspects, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%, 6.5%. It's 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. Headline inflation, after reaching a low of 4.3% in May 2023, rose in June and is expected to surge during July-August, led by vegetable prices. While the vegetable price shock may reverse quickly, possible El Nino weather conditions along with global food prices need to be watched closely against the backdrop of a skewed southwest monsoon so far. These developments warrant a heightened vigil on the evolving inflation trajectory. The cumulative rate hike of 250 basis points undertaken by the MPC so far is working its way into the economy. Nevertheless, domestic economic activity is holding up well and is likely to retain its momentum despite weak external demand. Considering this confluence of factors, the MPC decided to remain watchful and evaluate the emerging situation. Consequently,
The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% with preparedness to act should the situation so warrant. The MPC remains resolute in its commitment to align inflation to the 4% target and anchoring of inflation expectations. Further, with monetary transmission still underway, and I have given some details in the footnote of my statement with regard to this. When I say monetary policy transmission is still underway, there are some additional information given in the footnote. Those of you who are interested may have a look at it. Further, with monetary transmission still underway and headline inflation remaining higher than the 4% target, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I would now like to provide our assessment of the growth and inflation scenario. First, I would like to take up global growth. The global economy continues to face daunting challenges of elevated inflation, high levels of debt, tight and volatile financial conditions, continuing geopolitical tensions, fragmentations, and extreme weather conditions. Belying earlier apprehensions, a number of economies have demonstrated remarkable resilience, and the grim prospects of hard landing appear to have receded. Nevertheless, global growth is likely to remain low by historical standards in the current year and also in the next few years. Despite upward revision in the global growth forecast for 2023 by the International Monetary Fund. World merchandise trade volume growth is projected by the WTO to decelerate from 2.7% in 2022 to 1.7% in 2023. Headline inflation is easing unevenly across countries and remains above the target in major economies. While the pace of monetary tightening has been scaled down, policy rates could stay higher for longer. Financial markets, which had been buoyed by expectations of an early end to the cycle of monetary tightening, have turned volatile with sizable two-way movements in response to recent rating events and incoming data. Turning to global growth, these external factors are likely to impinge on the growth prospects of most advanced and emerging economies. India is, however, expected to withstand these external headwinds far better than many other countries. The momentum of overall economic activity in India continues to be positive. On the supply side, crop sowing has picked up with steady progress in the southwest monsoon. The temporal and spatial distribution of monsoon has, however, been uneven. Industrial activity is holding ground, as is evident from the latest data on Index of Industrial Production, that is IIP, Core Industries Output, and Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing. Buoyant services activity is reflected in healthy expansion in e-way bills, toll collections, railway freight, and a sharp jump in services PMI. On the other hand, commercial vehicle sales and domestic air cargo traffic contracted during Q1 of the current financial year. Aggregate demand conditions continue to be buoyant. Among urban demand indicators, domestic air passenger traffic, passenger vehicle sales, and households credit are exhibiting sustained growth. In the case of rural demand, tractor and fertilizer sales improved in June, while two-wheeler sales moderated. High growth in agricultural credit and improving sales volume of major fast-moving consumer goods, that is FMCG companies, suggest incipient recovery in rural demand, which will be reinforced by improving
Kharif prospects. So what I have done under growth is that first I highlighted about the supply conditions, the supply side factors. Then I have highlighted the aggregate demand conditions consisting of both rural and urban demand. And let me now turn to investment activity. Investment activity gained further steam on the back of government capital expenditure, rising business optimism and revival in private capex in certain key sectors. Continued increase in import and production of capital goods further reaffirms this trend. Construction activity also remains strong in first quarter of this year, as indicated by healthy growth in cement production and steel consumption. Capacity utilization in the manufacturing sector at 76.3% remained above the long period average, remained above the long-term average of 73.7%. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources taken together has increased by rupees 7.5 lakh crore during the financial year 23-24 so far, that is up to July 28th, as compared with 5.7 lakh crore a year ago. So just to repeat the figures, the flow of resources to the commercial sector in the current year so far is 7.5 lakh crore, and in the corresponding period of last year it was 5.7 lakh crore. On the downside, however, merchandise exports and non-oil, non-gold imports contracted further in June, and the growth in services exports decelerated amidst slowing external demand. Looking ahead, these underlying developments and the upcoming festival season are expected to provide support to private consumption and investment activity. The spillovers emanating from weak external demand and protracted geopolitical tensions, however, pose risks to this outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. The risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. The moderation in headline inflation to 4.6% in Q1 of 23-24 was in line with the projections set out in the June MPC meeting. There was pickup in headline inflation to 4.8% in June due to an upturn in food inflation. On the positive side, inflation excluding food and fuel, that is core inflation, has softened by more than 100 basis points from its recent peak in January 2023. The month of July has witnessed accentuation of food inflation, primarily on account of vegetables. The spike in tomato prices and further increase in prices of cereals and pulses have contributed to this. Consequently, a substantial increase in headline inflation would occur in the near term. Going by the past trends, vegetable prices may see a significant correction after a few months. The prospects of Kharif crops have also brightened thanks to improvement in the progress of the monsoon. Uncertainties, however, remain on domestic food price outlook due to sudden weather events and possible El Nino conditions in August and September. August and beyond. Global food prices are also exhibiting a hardening bias on renewed geopolitical tensions. Crude oil prices have firmed up in the recent weeks, and its outlook is clouded by demand-supply uncertainties. Assessment of the future trajectory of inflation is a continuous process.
We have a choice to modify our inflation projections in every meeting of the MPC if warranted, in the interest of better guidance, or avoid frequent changes and revise them only on fewer occasions for simplicity of presentation. Given the continuing uncertainties, our latest CPI inflation projection for 2023-24, assuming a normal monsoon, is revised to 5.4%, with Q2 at 6.2%, Q3 at 5.7%, and Q4 at 5.2%. Let me just repeat these numbers for better clarity. CPI inflation projections for 2023-24, that is for the current year, assuming a normal monsoon, as I have said, is revised to 5.4%, with Q2 at 6.2%, Q3 at 5.7%, and Q4 at 5.2%. Further, CPI inflation for first quarter of the next financial year, that is 2024-25, is projected at 5.2%. The risks are evenly balanced. Headline inflation projection for the second quarter of 23-24, that is, for the months of July, August, and September this year, has been revised up substantially, primarily due to price shock from vegetables. Given the likely short-term nature of these shocks, monetary policy can look through high inflation prints caused by such shocks for some time. The frequent incidences of recurring food price shocks, however, pose a risk to anchoring of inflation expectations, which was underway and which has been underway since September 2022. The role of continued and timely supply-side interventions assumes criticality in limiting the severity and duration of such shocks. In such circumstances, it is necessary to be watchful of the emerging trends and the risks to price stability. We have to stand in readiness to go beyond keeping Arjuna's eye to deploying policy instruments, if necessary. I reiterate what I said in the previous June policy statement. Bringing headline inflation within the tolerance band is not enough. We need to remain firmly focused on aligning inflation to the target of 4%. With this, I would now like to take up the liquidity and financial market conditions. The level of surplus liquidity in the system has gone up in the recent months on the back of the return of rupees 2,000 banknotes to the banking system, RBI surplus transfer to the government, pickup in government spending, and capital inflows. The overall daily absorption under the liquidity adjustment facility, that is LAF, was 1.7 lakh crore in June and 1.8 lakh crore in July this year. Despite such surplus liquidity, market response to RBI's 14-day variable rate repo auctions, that is VRR auctions, was lukewarm. Instead, banks preferred to place their surplus liquidity in the less remunerative standing deposit facility, that is SDF. Although the fine-tuning VRR auctions of 1 to 4 days maturity during this period evoked better response from the market, this essentially, let me just read it again. Although the fine-tuning VRR auctions of 1 to 4 days maturity during this period evoked better response from the market, this essentially reflects greater risk aversion among the banks to park large funds under the main operation. In this context, it is necessary to reiterate that fine-tuning operations, that is overnight operations up to 13 days, are undertaken to deal with special or exceptional situations and cannot become a rule.
In recent years, our stated stance on liquidity is to maintain adequate liquidity in the system to meet the productive requirements of the economy. Excess liquidity, on the other hand, can pose risks to price stability and also to financial stability. Hence, efficient liquidity management requires continuous assessment of the level of surplus liquidity so that additional measures are undertaken as and when necessary to impound the element of excess liquidity. Accordingly, it has been decided that with effect from the fortnight beginning August 12, scheduled banks shall maintain, I repeat, scheduled banks shall maintain an incremental cash reserve ratio, that is ICRR, of 10% on the increase in their net demand and time liabilities, that is NDTL, between May 19th and July 28th. I would like to read this sentence again so that the message gets across. It has been decided that with effect from 12th of August, scheduled banks shall maintain an incremental CRR, that is ICRR, of 10% on increase in their NDTL between May 19th and July 28th. And what I am now going to say is equally important. This measure is intended to absorb the surplus liquidity generated by various factors referred to earlier, including the return of rupees 2000 notes to the banking system. This is purely a temporary measure for managing the liquidity overhang. Even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. We have reviewed the position, and on that basis alone, on the basis of our internal assessment, I am making this statement that even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. The incremental CRR will be reviewed on 8th September or earlier with a view to returning the impounded funds to the banking system ahead of the festival season. I must add that the existing cash reserve ratio, that is CRR, remains unchanged at 4.5%. I would now like to focus on financial stability. The Indian financial sector has been stable and resilient as reflected in sustained growth in bank credit, low levels of non-performing assets, and adequate capital and liquidity buffers. Macro stress tests for credit risk reveal that scheduled commercial banks would be able to comply with the minimum capital requirements even under severe stress scenarios. There is, however, no room for complacency because it is during tranquil and good times that vulnerabilities may creep in. Hence, buffers are best built up during these periods. A stable financial system is a prerequisite for price stability and sustained growth. This is a shared responsibility in which regulated entities like banks, NBFCs and others are important stakeholders. On its part, the Reserve Bank remains steadfast in its commitment to safeguard the financial system from the emerging and potential challenges. We expect the same from the regulated entities also. As regards the external sector, India's current account deficit was contained at 2% of GDP in 2022-23 as compared with 1.2% in 2021-22. Merchandise trade deficit has narrowed in the first quarter of the current financial year, that is 23-24, with contraction in imports exceeding contraction in exports. Services exports and remittances are, however, expected to provide cushion to the current account deficit. We therefore expect the current account deficit to remain eminently manageable during the current financial year also.
On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have remained buoyant in 2023-24, that is in the current year so far. Net FPI inflows have been US dollar 20.1 billion up to August 8, which is the highest since 2014-15. In the corresponding period of the previous year, there were net outflows of 12.6 billion US dollars. The inflows under external commercial borrowings also witnessed a turnaround with net inflows of 6 billion US dollars during April-June this year, as against net outflows of 2.9 billion US dollars a year ago. Net foreign direct investment, that is net FDI flows to India, on the other hand, fell to $5.5 billion during April-May 2023 from 10.6 billion a year ago, reflecting a global slowdown in FDI inflows or in FDI flows. Latest available data suggest that India's external debt to GDP ratio improved to 18.9% at the end of March 23 from 20% at the end of March 2022. The Indian rupee has remained stable since January 2023. Foreign exchange reserves have crossed the mark of US 600 billion. The umbrella has gathered strength, and I am not saying this in the context of the monsoon rains. I would now like to proceed and announce certain additional measures. As you would be aware, we announced several measures as a part of the MPC statement, and a number of these measures have very far-reaching consequences, and they make a lot of impact on our overall financial inclusion, on our financial, on deepening of credit, on the spread of UPI, and on other aspects of the economy. So we have a few measures. I request your continued patience. The first announcement relates to review of regulatory framework for financial benchmark administrators. It has been decided to revise the extant regulations issued in June 2019 and put in place a comprehensive risk-based framework for administration of financial benchmarks. This will cover all benchmarks related to foreign exchange, interest rates, money markets, and government securities. The revised directions will provide greater assurance about the accuracy and integrity of the financial benchmarks. The next announcement relates to review of regulatory framework for infrastructure debt fund NBFCs, that is IDF NBFCs. At present, infrastructure debt funds provide refinancing facilities for lenders in the infrastructure sector. The extant regulatory framework for IDFs has been revised. The key changes in the revised framework are: 1. Withdrawal of the requirement to have a sponsor for the IDFs. 2. Allowing IDFs to finance toll operate transfer, that is TOT projects, as direct lenders. 3. Permitting IDFs to raise funds through ECBs. And 4. Making tripartite agreements optional for PPP projects. These changes are expected to further augment the capacity for infrastructure financing in the country. The next announcement relates to greater transparency in interest rate reset of equated monthly installments based floating rate loans. Now let me just read it again. I think that was too long. The next announcement relates to bringing in greater transparency in interest rate reset of EMI installment based floating interest loans. It is proposed to put in place a transparent framework for reset of interest rates on floating interest loans. The framework will require regulated entities to, again, there are various components.
it will require the regulated entities to, number one, clearly communicate with borrowers for resetting the tenor and or the EMI. Number two, provide options for switching to fixed rate loans or foreclosure of loans. 3, disclose various charges incidental to the exercise of the options. And 4, ensure proper communication of key information to the borrowers. These measures will further strengthen consumer protection. The next announcement relates to consolidation and harmonization of instructions for supervisory data submission. The Reserve Bank has from time to time issued several guidelines on submission of supervisory returns by the supervised entities. It has been decided to consolidate and harmonize such guidelines into a single master direction to reduce compliance burden and to promote greater ease of doing business for supervised entities. And the next announcement, actually there are 3 announcements within this announcement, and it relates to UPI. And basically the announcements are related to bringing in conversational payments and offline capacity on the UPI, enhancement in transaction limit of small value offline digital payments. The details are as follows. With the objective of harnessing new technologies for enhancing the digital payments experience for users, it is proposed to, number 1, enable conversational payments on UPI, which will enable the users to engage in conversation with artificial intelligence powered systems to make payments. Number 2, introduce offline payments on UPI using near field communication technology through UPI Lite on device wallet. And number 3, enhance the transaction limit for small value digital payments in offline mode from rupees 200 to rupees 500 within the overall limit of rupees 2000 per payment instrument. These initiatives will further deepen the reach and use of digital payments in the country. And this is the final announcement, the next one, and it's really impactful. We expect this announcement going forward will have a huge impact on our credit sector. The Reserve Bank, in association with the Reserve Bank Innovation Hub, started a pilot project in September last year for frictionless credit delivery through end-to-end digital processes, starting with Kisan Credit Card Loans, that is KCC loans. The pilot for KCC loans is currently operational in select districts of Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, UP and Maharashtra. Recently, dairy loans have been included in the pilot project in select districts of Gujarat. Based on the learnings from the pilots and to expand the scope of end-to-end digital lending processes, a public tech platform for frictionless credit delivery. I repeat, a public tech platform for frictionless credit delivery is being developed by the Reserve Bank Innovation Hub. The platform is intended to be rolled out as a pilot project in a calibrated manner. It will have an open architecture and open application programming interface, that is API and standards, to which all financial sector players can connect seamlessly. This initiative will accelerate the penetration of credit to the hitherto underserved regions and further deepen financial inclusion in our country. Let me now conclude. We have made good progress in sustaining India's growth momentum. While inflation has moderated, the job is still not done. Inflationary risks persist amidst volatile international food and energy prices, lingering geopolitical tensions, and weather-related uncertainties. In charting the course of monetary policy, we continuously assess the impact of our past actions, the evolving inflation dynamics,
and the implications of the incoming data for the economic outlook. I reiterate our commitment to align CPI inflation to the 4% target on a durable basis. We do look through idiosyncratic shocks, but if such idiosyncrasies show signs of persistence, we have to act. As we prepare to celebrate the Independence Day, the air is filled with hope and promise. Let me end by recalling the prophetic words of Mahatma Gandhi, and it is as follows. I have no doubt that our country would rise to the greatest height among the nations of the world. Thank you. Namaskar. आप सुन रहे थे एमपीसी की बैठक में जो तमाम निर्णय लिए गए, जिसकी घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे। सबसे अहम बात, दरों को अपरिवर्तित रखा गया, यानी कि जो रेपो दर थी 6.5%, उसे तीसरी बार भी बढ़ाया नहीं गया। साफ तौर पर जो बातें कही गई हैं शक्तिकांत दास द्वारा, उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं वैश्विक ग्रोथ की, खासतौर पर उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का जो जिक्र किया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है और इसीलिए ग्लोबल ग्रोथ पर लगातार नजर बनी हुई है। कई अहम बातें उन्होंने कही कि रेपो रेट में जिस तरह से कोई बदलाव नहीं किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से जो महंगाई दर है, यानी कि जो जीडीपी का फोरकास्ट है, उसको फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो वित्त वर्ष 2024 है, उसके लिए 6.5% उसको अनुमानित किया है। जब हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई दर की, उसको बढ़ाया गया है फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो वित्त वर्ष 2024 है, उसके लिए 5.4% रखा गया। हालांकि इससे पहले 5.1% रखा गया था, लेकिन क्योंकि जो ये बढ़ती महंगाई की कीमतें खासतौर पर खाद्य वस्तुओं को लेकर, उसको लेकर ये फैसला लिया गया। हालांकि आशान्वित नजर आए आरबीआई गवर्नर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम नए विकास इंजन की बात करते हैं जो कि भारत बन रहा है और उसे लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में सबका विश्वास, एक ब्राइट स्पॉट का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, उसको लेकर भी ये भी कहा कि एमपीसी कमेटी इस फैसले के हक में थी कि दरों को बढ़ाया ना जाए और कोई फैसला जो लिया गया, ये एमपीसी कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं वो एक मत और एक राय के साथ फैसला लिया गया है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर अभी हम जो बाजार पर नजर डालें, यानी कि अगर हम स्टॉक मार्केट पर नजर डालें, जिसको पहले ही डिस्काउंट कर चुका था, अभी गिरावट नजर आ रही है। महंगाई को रोकने के तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया। जब हम जीडीपी ग्रोथ को या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को तमाम अन्य देशों के साथ जोड़कर देखते हैं, तो भारत उनकी तुलना में बहुत आगे है, ये उनका मानना था। तमाम वॉलेटाइल फैक्टर्स जो हैं, डेट की जो सिचुएशन यानी कर्ज की जो सिचुएशन है, बाकी देशों की आर्थिक जो व्यवस्था है वो उससे बिगड़ रही है। जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की गई है, उसमें भी हमने देखा कि उछाल आया। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने बहुत अहम जो 4 उन्होंने मेजर्स दिए वो अपने दर्शकों को बता दें जो बहुत अहम है। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए यह किया जाएगा कि अब ऑफलाइन पेमेंट्स भी यूपीआई के जरिए की जा सकेंगी और कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स, यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी अब बातचीत से, जिस तरह से एलेक्सा है, एआई है, उसके जरिए आप पेमेंट्स कर पाएंगे। ये दूसरा मेजर था। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर ये था कि जो स्मॉल ट्रांजैक्शन, छोटे भुगतान हैं 200 से 500 रुपए तक के, वो उनको ऑफलाइन मोड में बढ़ाया जाएगा। और चौथी सबसे अहम बात, जो किसान क्रेडिट लोन, इसका पायलट प्रोजेक्ट्स कई राज्यों में चल रहा है, जिसमें हम बात करें आंध्र प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की, उसको अब साफ तौर पर बढ़ाया जाएगा ताकि इसका दायरा जो है वो बढ़े और डेयरी फार्मिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और इससे जुड़ी तमाम बातें भी करेंगे, हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ 10 में। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA?
WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा, change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले कल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच दिखी तीखी नोकझोंक। राहुल गांधी ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की तो सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों को तथ्यों के आधार पर घेरा। एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। और इसी बड़ी खबर पर अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, सुप्रभात आपको। तो साफ तौर पर आज नजरें सबकी और साथ ही साथ सांसदों की होंगी अनुज, प्रधानमंत्री जब अपना वक्तव्य देंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। देखिए आंचल, बिल्कुल आज क्योंकि तीसरा और अंतिम दिन है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा चल रही है, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद करीब 4 से और 5 बजे के आसपास आज पूरी चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत कांग्रेस ने की है, और कल कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान जो आपत्तिजनक जो बातें कही हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को कल घेरने की कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल चर्चा में भाग लेते हुए जवाब दिया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर काफी अभद्र जो है इशारे करने के आरोप लगाए हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी जब वो चर्चा में भाग ले रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेकर आए हैं जिसमें मुख्य भूमिका कांग्रेस की है, लेकिन किसी भी चर्चा में भाग लेना संसदीय परंपराओं का जिस तरीके से उल्लंघन किया गया है चर्चा के दौरान, ये एक चर्चा का विषय कल पूरी संसद के अंदर रहा। और आज अगर हम मीडिया की सुर्खियों को देखें तो वही बातें सामने आई हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष पर विपक्ष की तरफ से, उनका सिलसिलेवार एक एक जवाब जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने दिया। और उस देश के अंदर आजादी से लेके जब तक कांग्रेस की सरकार रही उसमें इस बात को बताया गया कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या कुछ किया, कुछ नहीं किया। पूर्वोत्तर बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए राज्य थे, और उन्होंने उन घटनाओं का, उन हिंसाओं का भी जिक्र किया जिसमें कोकराझार के अंदर, असम के अंदर 3 महीने तक लगातार कर्फ्यू रहा और कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री ना वहां पर उस घटना के दौरान गया, ना केंद्रीय गृह मंत्री उस घटना के दौरान गए थे। और संसद के अंदर जब चर्चा और बयान की मांग की गई तो एक राज्य मंत्री के द्वारा बयान दिलवाया गया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम विपक्ष को इस बात को तो ध्यान में रखना चाहिए कि मणिपुर की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय किस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग करता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर खुद गए हैं, तो इस गंभीरता को लेकर विपक्ष को सोचना चाहिए था कि उनकी सरकार में क्या कुछ हिंसा के दौरान कदम उठाए जाते थे और किस तरीके कदम अब उठाए जा रहे हैं। और आज पूर्वोत्तर के विकास की बात करें तो आज वो कहां पर खड़ा है। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आज भी निश्चित तौर पर चर्चा चलेगी, क्योंकि आज जो केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो चर्चा में भाग लेंगी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो भी आज चर्चा में भाग लेंगे। लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर आज अंतिम दिन है, चर्चा होगी और प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। दूसरी तरफ आंचल, अगर हम राज्यसभा की बात करें, हम जानते हैं कि लोकसभा से कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जो पहले ही पास हो चुके हैं, और अब क्योंकि ये सत्र, मानसून सत्र अपने अंतिम चरण में है, कल संसद की जो कार्यवाही है वो खत्म होगी, तो ऐसे में आज भी कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें
फार्मेसी अमेंडमेंट बिल है, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, उनकी सर्विसेज को लेकर एक बिल है। आज वो राज्यसभा के अंदर पास और पेश किए जाएंगे। अच्छा, एक सबसे अहम बात यहाँ पर जो सभी तरफ से हमें सुनाई दे रही है वो ये है कि लगातार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध रहा, जिसको लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। बहुत उम्मीद थी कि जिस तरह से उनके सांसद अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी से बहुत उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका वक्तव्य था वो पटरी से उतरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने शुरुआत भी जिस तरह से प्रधानमंत्री को घेरने की और उसका अंत भी वक्तव्य का उसी से किया, जिसमें बहुत बार वो खुद भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। देखिए आंचल, बहुत सही सवाल आपने पूछा, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चाहे हम संसद की बात करें या संसद से बाहर के बयानों की बात करें, राहुल गांधी जब भी किसी गंभीर मामले को बयान देते हैं तो वो पटरी से उतरते हुए नजर आते हैं। ऐसा आरोप कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगाया, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि ठीक है भाई, आप अविश्वास प्रस्ताव आप सरकार के खिलाफ लेकर आए हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ कम से कम 2-4 ऐसे मुद्दे तो लेकर आते जो कम से कम देश की जनता के सामने आते। निश्चित तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री को घेरना और सिर्फ सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना, यही क्या सिर्फ विपक्ष का मकसद है? अगर वो ऐसे मुद्दों को लेकर आते तो पता चलता कि उनके पास कुछ है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वो सरकार को तथ्यों के आधार पर घेरने की कोशिश करें। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का कल भाषण रहा है, उसको लेकर पूरे सदन के अंदर ये चर्चा रही है कि उन्होंने जब शुरुआत की चर्चा की आंचल, तो अपनी यात्रा के बारे में अगर हम 20 मिनट की चर्चा की बात करें तो 10 से 12 मिनट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा के बारे में वो बात करते रहे, और अंतिम में जब उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की तो वो संसदीय परंपराओं को भूल गए। भारत माता की हत्या की बात उन्होंने यहाँ पर कही, और सबसे बड़ी बात यही है, ऐसे में ना सिर्फ कांग्रेस के सदस्य बल्कि उनके जो घटक दल हैं, गठबंधन के साथी हैं, वो भी मेज थपथपा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ऐसे में सत्ता पक्ष ने यही कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे थे और ऐसे में बाकी लोग ताली बजा रहे थे। तो ये बात सामने आती है कि ये जो एक गठबंधन बना है, क्या ये मजबूरियों का गठबंधन है कि राहुल गांधी के किसी भी बयान पर ताली बजा दी जाए, जबकि उनके जो शब्द थे वो अमर्यादित शब्द थे। और सबसे बड़ी बात है, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो ऐसे में जो उन्होंने व्यवहार किया संसद से जाते हुए, वो भी आज मीडिया की सुर्खियों में बना है। और जो उन्हें वक्त दिया गया था, अनुज, हम जानते हैं कि संसद का 1 मिनट कितना कीमती है, और इस वक्त को अगर सोने की तुलना की जाए तो उसे उन्होंने मिट्टी में तब्दील किया है, जिसका जिक्र लगातार आने वाले कई सालों में किया जाएगा। और ये मॉनसून सत्र कई मायनों में सभी को याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जब आज प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे, उस पर रहेंगी सबकी निगाहें, लेकिन संसद के इसी मॉनसून सत्र में आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। वहीं निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित के प्रस्ताव के साथ पेश किया जाएगा। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इससे पहले इस महीने की 2 तारीख को राज्यसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम जो है 1957 में संशोधन करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था। वहीं 28 जुलाई को लोकसभा द्वारा पहले ही इसे पारित किया जा चुका था। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में मॉल्ट्री का पौधा लगाकर इस मौके को यादगार बनाने की कोशिश की। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी और इस मौके पर राज्यसभा के अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।
बात G20 की। कोलकाता में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल बैठक में संपत्ति की वसूली, भगौड़े धन अपराधियों के खिलाफ कदम, निर्वाचन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने जैसे कई मुद्दों से संबंधित मसौदा दस्तावेजों पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्य देशों और आमंत्रित देशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, ऑडिट एजेंसियों से लेकर कई संगठनों के 154 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक के बाद 12 अगस्त को भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन किया जाएगा। खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, जिसके परिसर में एएसआई टीम का सर्वे जारी है। माना जा रहा है कि टीम ने कल पूरे दिन व्यास के तहखाने के सहित गुंबद उत्तरी और दक्षिणी छोर पर सर्वे का कार्य किया। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे को लेकर मीडिया में आ रही खबरों को लेकर कल वाराणसी जिला प्रशासन की दोनों पक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें यह व्यवस्था बनी कि एएसआई की टीम जब ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश करेगी या वापस बाहर आने पर ही दोनों पक्ष के लोग बात कर सकेंगे। आज जिला अदालत की तरफ से भी मीडिया के लिए मुस्लिम पक्ष की अपील पर निर्देश आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान में बड़गाम में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। ये तीनों गिरफ्तार आतंकी सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। तीनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इनके पास से बरामद हथियारों में चाइनीज हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन, 57 लाइव बुलेट शामिल हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं अमृतसर में पुलिस ने 12 किलो हेरोइन बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी खेप पहुंचाने की फिराक में थे। आरोपी पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में रहे। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। आगे की जांच जारी है। बात मौसम को लेकर, मौसम विभाग ने 5 दिनों तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने अगले सप्ताह देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया। वहीं विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है, जिसके कारण गिरी नदी का जल प्रवाह बढ़ गया। आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। प्रशासन बचाव के काम में जुटा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में जारी बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी तेज रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हवा की वजह से तापमान सामान्य बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली भंग हो गई। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही संसद को भंग कर दिया गया। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। इससे वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। साथ ही अगले आम चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। अब पाकिस्तान में नई निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार सत्ता संभालेगी। इससे पहले निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी पार्टियां इस बात पर एकमत है कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। नेशनल असेंबली समय से पहले भंग होने के कारण पाकिस्तान निर्वाचन आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा। यदि नेशनल असेंबली ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते। खबर इक्वाडोर से, जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविंसेसियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
चुनाव प्रचार के सिलसिले में क्वेटो गए फर्नांडो को एक शख्स ने गोली मारी। स्थानीय मीडिया के अनुसार जैसे ही फर्नांडो अपनी कार में बैठने जा रहे थे तब एक शख्स ने उनको गोली मारी सर में। इस घटना पर राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने कहा कि अपराध बख्शा नहीं जाएगा। चीन में अमेरिकी निवेश पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा, यह फैसला अमेरिका को सुरक्षित रखने और सैन्य नवाचार की अगली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर अमेरिका में निवेश पर जोर दिया। विश्व शेर दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। गुजरात में विश्व शेर दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विश्व शेर दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इस समारोह का सीधा प्रसारण सौराष्ट्र के 10 जिलों के 8,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लॉयन एंथम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के साथ शेर सूचना वेब ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। आज विश्व शेर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, यह दिन उन शानदार शेरों का जश्न मनाने का एक अवसर है जो अपनी ताकत और भव्यता से हमारे दिलों को मोहित कर लेते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में लगातार शेरों की आबादी में बढ़ोतरी हुई। मैं शेरों की आवाज की रक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं और उनकी रक्षा करना जारी रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो फलते फूलते रहें। और अब बात हॉकी की। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में ग्रुप दौर के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 4-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप दौर में शीर्ष पर रहा। भारत अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगा। हालांकि मैच में दोनों ही ओर से आक्रामक खेल देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर के खत्म होने से चंद समय पहले गोल दाग 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने ये गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया, जिसे हरमनप्रीत सिंह ने किया। भारतीय टीम का जलवा बरकरार रहा और टीम ने दूसरे क्वार्टर में मिले एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल बढ़त को 2-0 कर लिया। ये गोल भी हरमनप्रीत सिंह नहीं किया। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने एक बार फिर जौहर दिखाया और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर 3-0 किया। आखिरी क्वार्टर में भारत ने फील्ड गोल कर स्कोर लाइन को 4-0 कर दिया। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।